So I don't say this often, but एक आबे ये क्या है? ये कौन पहनने वाला है? अलसीफ से पहले हम आ गए हैं गोल्ड सूक और स्पाइस सूक बिकॉज वी रियलाइज कि अलसीफ एक्चुअली सनसेट के टाइम पे ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो अब हम एंटर हो गए हैं गोल्ड सूक में। लेट्स सी व्हाट्स ऑल दिस क्रेजीनेस अबाउट द गोल्ड देयर इज़ इन दुबई। यहाँ पे बप्पी लहरी का काफ़ी मन लगता है। So little bit information about this market. So Gold Souk Dubai is the world's largest gold market. And at any given point of time, यहाँ पे at least 250 से 500 किलो gold present होता है. It can be a great deal to buy gold from here because prices are way lesser. But you might get into trouble at customs because a lady can carry 40 grams of gold and a man can carry only 20 grams of gold. So after having a great time at Gold Souk, we were now headed to Spice Souk to shop some perfumes and saffron. Very first one. The very first one, this one. This one. So that's a super cool experience of shopping fragrances because you would simply pick up the one that you like. They're going to pack it into these small bottles and give it to you, and it becomes a perfect gift to take away from Dubai. Right now I feel like I'm in an Aladdin game, वो जैसे वो typical Arabian markets दिखाते हैं. This has that perfect feel. आ जाओ भाई, मिर्ची चाहिए? मिर्ची पश्मीना कफ्तान केसर चाहिए? केसर इंडियंस के साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम इस टाइप के मार्केट्स के लिए ऐसे ट्रेंड हैं बचपन से कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है. यस मैम, डू यू वांट दिस, ब्रदर डू यू वांट दैट. लेकिन हम निकल जाते हैं यहाँ से. मतलब ऐसे मार्केट में हमारा कंफर्ट जोन है, हमें अपना सा लगने लगता है. यहाँ पे भी लाला का बाज़ार को बनिया स्ट्रीट ही बोलते हैं. क्या बात है, बनियाज आर द स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. Dubai continues to surprise. Now heading to Alseef. Hopefully we catch some sunset. If not, Alseef तो Alseef ही रहेगा. So let's go and see. So from Gold Souk सिर्फ यहाँ पे रिवर के अक्रॉस है अलसीफ.
तो हमें नहीं पता था कि यहाँ से आप बोट भी ले सकते हो, तो हमने अब बोट की टिकट करा ली है। वो बोट सिर्फ 2 दिरहम पर पर्सन है, तो वी गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट नाउ। सही है, मतलब कैब में जाते तो एटलीस्ट 25-30 दिरहम तो लगते ही लगते, तो 25-30 दिरहम की जगह हम 4 दिरहम में जा रहे हैं और अलसी पहुँच जाएंगे। सो अलजीफ इज़ एक्चुअली अ मॉडर्न क्रिएटेड स्ट्रक्चर, बट उसको एकदम वैसा बनाया जैसे हेरिटेज अरेबियन ओरिजिनल मार्केट्स होते थे। तो ये बहुत ही कूल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आज की डेट में सारी अरेबियन नेशंस इतने डेवलप्ड हैं कि ये एक्सपीरियंस आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इट्स सुपर कूल टू वॉक इन टू द लेन्स जैसे एक हेरिटेज इन्वायरमेंट होता है। So there is a super cool Starbucks here, which is set into this whole design how Arabian markets used to be. So damn cool. पूरा mud structure है, उस पे you have this super cool Starbucks logo. ये हमारी जानने वाली नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, अलजीफ एक डिपिक्शन है अरेबियन हेरिटेज मार्केट का। अब मुझे नहीं पता था कि अरेबियन हेरिटेज मार्केट में चौकीदानी भी होता था। ये चौकीदानी क्यों बना रखा है यहाँ पे? मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे आया था, यहाँ मारवाड़ी म्यूजिक बज रहा है। ये सब दुबई में चल रहा है, ये दुबई है।